Hi, all the students. Welcome once again to ASCAT YouTube channel. My name is Anil Chaudhary, a coach for VARC. तो फाइनली स्टूडेंट्स आज 16th नवंबर हो चुकी है and only 1 week is left for CAT. So I know that anxiety would be there, nervousness would be there, and a bit of insecurity, uncertainty. तो ऐसी बहुत सारी चीजें और मिक्स्ड फीलिंग्स स्टूडेंट्स के मन में चल रहा होगा. But anyway, this is the time when you people have to balance your temperaments. I believe that ये जो टाइम है स्टूडेंट, जिन बच्चों को लगता है कि कैट इज ऑन 24th नवंबर, लेट मी टेल यू पीपल, कैट आपका स्टार्ट हो चुका है. एटलीस्ट साइकोलॉजिकली कैट हैज बिगन. तो हर सेकेंड, हर दिन, every hour, you people will have to fight a battle within. And this is something I would say beauty of cat. जो बच्चे कैट के साथ बहुत अटैच्ड हैं, जिन्होंने बहुत महीनों तक बहुत अच्छी मेहनत की, मुझे लगता है स्टूडेंट्स दिस इज द टाइम जब हमें साइकोलॉजिकली फ्रॉम विदिन इस बैटल को जीतना है. तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है. स्टूडेंट्स एंजॉय दिस टाइम. थोड़ा बहुत नर्वस होना तो नेचुरल है. ओके, चलो एनीवे स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन टू टुडेज एजेंडा. आई नो दैट यू पीपल माइट बी नर्वस, to ensure that you people can actually gain that confidence and to give some final tips to boost your accuracy, especially in verbal ability. And when we are going to discuss about VA, definitely this is going to help you in RC also. But definitely students, आज का जो सेशन है वो तुम्हारी accuracy को boost करने में बहुत positive role play करेगा. I will be discussing with you 5-6 questions purely based on para summary. But students, जब मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, I'll actually point out few very important things to make you understand how we people can ensure that we people can escape the traps of wrong answers. तो कैसे की एलिमेंट्स और की पॉइंट्स और की वर्ड्स को हम फोकस करके अपनी एक्यूरेसी को बूस्ट कर सकते हैं. So that becomes the subject matter of today's discussion. So welcome on board all the students. फटाफट एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, are we all ready for today's session? So 5-6 very interesting questions we are going to discuss. Para summary, that becomes the subject matter of today's discussion. But students, आज जो मैं डिस्कस करूंगा para summary में, that is going to help you a lot in solving the other questions also. So yes, one by one, total 6 questions we are going to discuss. अच्छी तरह से इस पूरे एनालिसिस को मेरे साथ करना, and I vouch your confidence will increase. आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और आपको लगेगा कि सर अब मैं जब किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूं तो अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होता है. चलिए, तो आई जस्ट टेक 30 मोर सेकेंड्स. यस, हाय शुभम. यस, वेलकम. हाय युवराज. अरे थैंक यू सो मच युवराज. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आई एम गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन thoroughly and among the 4 options you have to give the correct answer. बिल्कुल एक्टिवली मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना. एंड द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो लेटर ऑन, हर क्वेश्चन को पॉज करो, सबसे पहले खुद सॉल्व करो. एंड सी स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन को मार्क करते समय ट्राई टू जस्टिफाई द आंसर, ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद योरसेल्फ. कैसे करना है और कैसे हम लोग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ओके, तो क्या 2024 और आज का सेशन कम से कम आपका 1 या 2 करेक्ट आंसर तो बढ़ा ही देगा. आपके जो 2 आंसर्स गलत होने वाले थे, पर्टिकुलरली इस सेशन की वजह से, वो सही हो जाएंगे. तो अब आप सोचो स्टूडेंट्स, एक आंसर जो गलत होता है, अगर वो सही हो जाता है तो सीधे 4 मार्क्स का बेनिफिट पर क्वेश्चन. तो 8 नंबर आपको ये सेशन दिलाएगा. दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. ओके, चलो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नाउ. चलिए, this becomes the first question. I want all the students to understand it thoroughly. A paragraph is given to us and 4 options are there. Okay, I want everyone अच्छी तरह से पढ़ो, पूरे पेशेंस के साथ पढ़ो and give the answers in the chat box. Okay, done. Your time starts now. So you people have to find out the essence of the paragraph. Okay, done. And take your own time. बहुत जल्दबाजी में इसको करने की जरूरत नहीं है. अच्छी तरह से ऑप्शंस को कंपेयर करो एंड गिव द आंसर. राइट. यस, हाय आदित्य.
Hi Vinayak. Yes, all the students who have joined us now, we are taking the first question, and today we are going to have a discussion on para summary. But the discussion which we are going to take today will help you a lot in solving all the questions of VA and RC as well. Welcome, Akarshit. Shall we start giving the answers now? And सभी स्टूडेंट्स अगले 25-30 मिनट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ये 25 मिनट्स का डिस्कशन बिल्कुल भी मिस मत करना. टिल द लास्ट क्वेश्चन स्टे विथ मी. Yes, come on, all the students start giving the answers now. Okay, one student has given the answer. Okay, one more student has given the answer. और अभी फिलहाल दोनों स्टूडेंट्स के आंसर्स अलग अलग हैं. इसी से पता चलता है व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एक्यूरेसी इज डेफिनेटली अ कंसर्न इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ वीए. बट मैं आप सबको कहता हूं ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली वी पीपल हैव टू हैंडल. शुभम हैज आल्सो गिवन द आंसर. ओके, और मैं एक एक ऑप्शन को डिस्कस करूंगा. ओके, आई विल आल्सो टेक माय ओन टाइम टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. और जब मैं एक एक ऑप्शन को डिस्कस करूंगा तो यू विल एक्चुअली कम टू नो कि पेपर सेटर कैसे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है. Yes, come on, rest of the students give the answer. Okay, hi, Janil. Hello, rest of the students give the answer. Akarshit, Aditya, Shubham. Okay, shall I give the answer now? Start करें discussion. Okay, Ishita has given the answer. अब देखो, किसी स्टूडेंट का आंसर सेकेंड ऑप्शन है, कुछ बच्चों का आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, and there is one student who says the answer is fourth option. Okay, and one more student says the answer is 2. तो कुल मिलाकर जो आंसर है वो बहुत मिक्स्ड है. अब स्टूडेंट्स अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हिच इज द करेक्ट आंसर एंड व्हाई. और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रॉन्ग आंसर्स हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मेरे साथ एक बार इस पैराग्राफ को वापस से पढ़ लो. A cave exploration team in China has discovered an enormous sinkhole with a well-preserved primitive forest at the bottom. The forest likely contains a variety of species of small animals that are unknown to science. George Venny told the Washington Post, Marisa Lati, last month. The large hole measures over 1,000 feet in length, almost 500 feet wide, and 630 feet deep, with a volume of over 176 million cubic feet. The giant sinkhole, also called, जो भी नाम दे रखा है, प्रोनाउंसिएशन में जाने की जरूरत नहीं है, और heavenly pit in Chinese is located in the Li County, raising the number of giant sinkholes in the county up to 30. Okay, तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स ये पता चला कि एक बहुत बड़ा सिंखोल है और उसमें प्रिमिटिव एक फॉरेस्ट, डायमेंशंस आर गिवन टू अस एंड द काउंट इज गिवन टू अस कि उस काउंटी में जो नंबर ऑफ सिंकहोल्स हैं दैट नंबर हैज बिकम 30 नाउ. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं. अ जायंट सिंकहोल ऑल्सो कॉल्ड टियन किंग और हेवनली पिट located in Li County in China may contain a variety of species of small animals that are unknown to science. Animals that are unknown to science. यहाँ पर भी क्या लिखा है? Small animals that are unknown to science.
तो वैसे स्टूडेंट जहाँ तक ये लास्ट लाइन है, दिस सीम्स टू बी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाइंट सिंक होल है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। द नेम इज ऑल्सो गिवन टू अस, इवन दैट इज ओके। द एरिया इज ऑल्सो गिवन टू अस, इवन दैट इज ओके। But students, फिर भी first option is not the correct answer. And why first option is not the correct answer? Because पहली चीज तो स्टूडेंट्स फर्स्ट में कहीं पर भी फॉरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, whereas you people should understand उस सिंक होल में हमें क्या मिला? A well preserved primitive forest. तो when I say primitive forest, इसका मतलब है जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही पुराना, it is ancient. So anyway students, first option cannot be the correct answer because प्रिमिटिव फॉरेस्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेजरली हमें उस सिंक होल में मिला क्या? अ प्रिमिटिव फॉरेस्ट। और वो जो फॉरेस्ट है दैट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ स्पीसीज। So though we are talking about a variety of species, but nowhere we have mentioned about the primitive forest. So therefore first option is not the correct answer. तो ये समझ में आया जिन बच्चों का आंसर फर्स्ट ऑप्शन था, अब क्या उन्हें पता चलना चाहिए why the answer is not first option. Coming on students, second option. I have seen that so many students have given second option as the correct answer. The most recently discovered sinkhole in China, measuring over 1000 feet, 500 feet wide and 630 feet deep, with a volume of over 176 million cubic feet. Absolutely clear. With the primitive forest, चलो primitive forest भी दे रखा है, has raised the number of giant sinkholes in China up to 30. Wow. Question number 2 में स्टूडेंट्स आप देखो पेपर सेटर ने कितना ब्यूटीफुली आपको कंफ्यूज किया, and I see so many students giving second option as the correct answer. But let me tell you, second option is also not the correct answer. And why is it so? Because the number of giant sinkholes in the county up to 30. तो वो जो ली काउंटी है उस काउंटी में स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ सिंक होल्स है दैट नंबर हैज नाउ इंक्रीज टू 30, जबकि स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन कहता है द नंबर ऑफ जायंट सिंक होल्स इन चाइना अप टू 30। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स आप देखो उस काउंटी में नंबर 30 हो चुका है, न कि पूरे कंट्री में। तो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है in what is given in the paragraph and what is written here. But this is something which a CAT aspirant should be able to understand. You people should be able to find out that ये जो 30 है ना वो काउंटी का काउंट है, ना कि पूरे चाइना का काउंट है। इसीलिए जिन बच्चों का आंसर सेकेंड ऑप्शन है, अगेन योर आंसर इज रॉन्ग। कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3. Over 1000 feet in length and almost 500 feet wide, a well-preserved primitive forest in China likely contains a variety of species. Anyway students, थर्ड ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज कहीं पर भी मैं उस जाइंट सिंक होल के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, जबकि ये जो डायमेंशंस हैं ये फॉरेस्ट का डायमेंशन नहीं है, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द जाइंट सिंक होल। ओके, so third option cannot be the correct answer. Now only one option we are left with. An ancient forest in a recently discovered Chinese sinkhole may contain small animal species unknown to scientists. Anyway students, फोर्थ ऑप्शन को हम किसी भी तरह से निगेट नहीं कर सकते। So whatever details are given in the fourth option, all the details are absolutely correct. I do understand जो फोर्थ ऑप्शन है बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करता, but anyway students, whatever details are given to us in the fourth option, everything is okay. So therefore the correct answer is fourth option. और बाकी तीनों ऑप्शंस गलत है। क्यों गलत है ये समझ में आ गया होगा। तो इससे स्टूडेंट्स हमें ये समझ में आता है कि एक पेपर सेटर कैसे डिटेल्स के साथ प्ले करता है, कैसे स्टूडेंट्स ही प्लेज विद द वर्ड्स। तो यू पीपल हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि एक तो ये सिंक होल है, सेकेंड अ प्रिमिटिव फॉरेस्ट हैज बीन डिस्कवर्ड, थर्ड उसमें बहुत सारे एनिमल्स मिले जो अभी तक साइंस को शायद पता ना हो, एंड द नंबर ऑफ सिंक होल्स that count has become 30 in that particular county. तो अगर ये पॉइंट्स अपने बहुत क्लियर है तो गिविंग द आंसर्स विल बी पॉसिबल हियर। तो स्टूडेंट्स बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? हाँ शुभम, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। हाय लक्षिका, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अगर वहां पर चाइना की जगह काउंटी होता तो मैं सेकेंड ऑप्शन को डेफिनेटली कंसिडर करता। बट एनीवे
ठीक है, फिलहाल तो सेकेंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, चलो सभी स्टूडेंट्स क्लियर हो चुका है, डन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक द सेकेंड क्वेश्चन। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन तभी लूंगा जब सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स टीम को लाइक करेंगे। मैंने पहले ही कंडीशन दे दी है, फर्स्ट यू पीपल विल हैव टू शेयर योर अप्रिसिएशन, एक्सप्रेस योर अप्रिसिएशन एंड देन यू विल हैव टू जॉइन द सेशन। अब तो इतने सेशंस हो चुके हैं यार, कम ऑन यू पीपल कैन डू दिस। और अपने जितने जूनियर्स हैं उन सबसे हमको कनेक्ट करो, बिकॉज अभी तक आपको समझ में आ गया होगा जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन कैट की कोचिंग कर रहे हैं उन सब में स्टूडेंट्स अगर आप कंपेयर करोगे, द ट्रायो ऑफ अनिल सर, अंकित सर एंड अर्पित सर, ये कैट के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रायो है। एंड कैट 2025 वी पीपल आर गोइंग टू लॉन्च अ फर्स्ट लाइव बैच 1 दिसंबर 2024 से। तो एक साल अगर कोई बच्चा हमारे साथ पढ़ेगा, आप जस्ट इमेजिन करो क्या लेवल वो अचीव करेगा। तो स्टूडेंट्स अपने जूनियर्स को हमसे कनेक्ट करें और 1 दिसंबर वाले बैच के लिए उन्हें मोटिवेट करें। चलिए स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आदित्य घर से पेश करके ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Yes, come on everyone, start giving the answers now. Okay, one student has given the answer, Ishita has given the answer. Okay. Lakshika has also given the answer. बिल्कुल, इस क्वेश्चन को भी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड यू विल एक्चुअली कम टू नो हाउ वी नीड टू गेट द राइट आंसर और रॉन्ग आंसर्स को कैसे एलिमिनेट करना, कैसे स्टूडेंट्स उसमें से जो फॉल्स हैं, जो लैकिंग्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो 3-4 स्टूडेंट्स ने, 5 स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर सो फार। कुछ बच्चों का आंसर थर्ड ऑप्शन है, 1 स्टूडेंट सेज फर्स्ट ऑप्शन एंड 2 स्टूडेंट से फोर्थ ऑप्शन। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, युवराज हैज गिवन द आंसर, नीतीश हैज गिवन द आंसर, सोनाक्षी हैज गिवन द आंसर। चलो भाई, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आकर्षित, आदित्य, शुभम का आंसर आ चुका है, विनीत, जैनल, एवरीवन। स्टार्ट करें डिस्कशन। चलो मैं बताता हूँ विच इज द करेक्ट आंसर। अभी भी मैं देख रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स के आंसर्स अलग अलग हैं, तो यूनानिमिटी है ही नहीं, हर स्टूडेंट का आंसर अलग अलग, जबकि स्टूडेंट्स 1 पैराग्राफ एंड द क्वेश्चन हैज टू बी द ऑप्शन इज बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ ओनली। बट स्टिल आप देखो कितने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। और आई मस्ट टेल यू, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन बेस्ड है ही नहीं, कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। और एक पेपर सेटर कैसे कंफ्यूज करता है, ये क्वेश्चन जब आप समझोगे तो बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखो, लेट अस टेक द पैराग्राफ वंस।
A tablet made in ancient Babylon around 1500 BCE, before Common Era, may be the earliest known depiction of a ghost. A top scholar of ancient Middle Eastern inscriptions has argued the clay tablet is part of a guide to exorcising ghosts held in the collections of the British Museum. Reports, the name is given for the observer. Again, a name is given, a curator in the London Museum's Middle Eastern Department, and the author of the forthcoming book, The First Ghost. Most ancient of legacies says the image on the tablet is only visible when viewed from above under a light. चलिए स्टूडेंट्स, किसी टैबलेट के बारे में बात हो रही है, मेड इन एंशिएंट बेबीलोन, टाइम पीरियड इज गिवन टू अस, और साथ में ये लिखा है मे बी द अर्लीस्ट नोन डिपिक्शन ऑफ अ घोस्ट. ओके, एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, साथ में लास्ट लाइन में ये लिखा है दिस द इमेज ऑन द टैबलेट इज ओनली विजिबल व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव अंडर अ लाइट. ओके, चलिए कुछ की पॉइंट्स हमको समझ में आ चुका है. And the clay tablet is part of a guide to exorcising ghosts held in the collections of the British Museum. Exorcising का मतलब होता है रिमूव करना, हटा देना, बाहर फेंक देना. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ सी, अब जो भी पॉइंट्स दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेट अस सी व्हिच इज द करेक्ट आंसर. आई सी दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन. तो लेट मी कम ऑन द फर्स्ट ऑप्शन. Possibly the earliest known depiction of a ghost, visible only when viewed from above under a light, is part of a guide to exorcising ghosts from around 1500 BCE. Now students, you people do understand. Possibly the earliest known depiction of a ghost. ये लाइन तो बिल्कुल सही है. Visible only when viewed from above under a light. Even this is absolutely okay. And as part of a guide to exorcising ghosts, even this point is okay. And the time period is also okay. But first option is not the correct answer because सबसे important जो keyword है, tablet, that is not given here. So what are we talking about? What are we talking about? Do understand? तो अगर मैं tablet के बारे में ही बात नहीं करूँगा तो students ये पूरा paragraph तो meaningless है. तो you people do understand. जिन बच्चों को लगता है the first option is the correct answer, you people try to understand the most important keyword tablet, that is not mentioned here. So what are we discussing actually? The first option is not the correct answer. ये समझ में आया? तो जिन बच्चों का आंसर फर्स्ट है, लक्षिका, could you understand this? हाय दिव्यांश. चलिए अब अपन आते हैं, कुछ बच्चों का आंसर है थर्ड एंड फोर्थ. तो चलिए सबसे पहले अपन फोर्थ पर आ जाते हैं. Visible only when viewed from above under a light. A Babylonian tablet from around 1500 BC, which is part of a guide to exorcising ghosts, may contain earliest known depiction of a ghost. Students, देखो क्या क्या पॉइंट सही है. Let us try to understand. Visible only when viewed from above under a light. यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है. But now the big question is, what is visible under a light? What is visible under a light? यहाँ पर क्या लिखा है, a Babylonian tablet. So students have tried to understand, do I mean to say that that tablet is visible under a light? Do I mean to say that the tablet is visible from above under a light, or says the image on the tablet is only visible? तो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या under a light from above the tablet is visible or the images on the tablet are visible? तो मैं किसकी विजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, टैबलेट या फिर उस पर इमेजेस की? तो बहुत ही स्मार्टली पेपर सेटर ने स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज किया. जिन बच्चों का आंसर फोर्थ ऑप्शन है, ऑल द स्टूडेंट्स आर रॉन्ग. फोर्थ ऑप्शन इज इंडीड नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द विजिबिलिटी ऑफ द इमेज rather than the tablet. I repeat, I am talking about the visibility of the image on the tablet rather than the tablet itself. Hence, fourth option cannot be the correct answer. आई गेस जिन बच्चों का आंसर फोर्थ है उन्हें समझ में आ गया होगा वाई फोर्थ इज नॉट द करेक्ट आंसर. अब स्टूडेंट्स, कई बच्चों ने थर्ड ऑप्शन आंसर दिया. लेट मी कम ऑन थर्ड ऑल्सो. अ बेबीलोनियन टैबलेट फ्रॉम अराउंड 1500 BC दैट इज पार्ट ऑफ अ गाइड टू exorcising ghosts may contain a depiction of earliest known ghost. अब स्टूडेंट्स,
इस लाइन पर थोड़ा सा मेरा ऑब्जेक्शन है। यहां पर क्या लिखा है? मे बी द अर्लीस्ट नोन डिपिक्शन ऑफ अ घोस्ट, मे बी द अर्लीस्ट नोन डिपिक्शन ऑफ अ घोस्ट। यहां पर क्या लिखा है? डिपिक्शन ऑफ अर्लीस्ट नोन घोस्ट। आई थिंक स्टूडेंट्स, जो फ्रेज यहां पर मेंशन है एंड जो फ्रेज मैंने यहां पर यूज किया, आई थिंक यू पीपल आर एबल टू मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हेंस, जिन बच्चों को लगता है कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, even third is not the correct answer. Now coming on students, only one option is left. Let me come on that. A Babylonian tablet about 3500 years old. अब सभी बच्चों ने सेकेंड ऑप्शन को इसलिए इग्नोर किया होगा कि सर यहाँ पर 1500 लिखा है और यहाँ पर 3500. So possibly the number is not correct, and that is the reason you might have thought the second option cannot be the correct answer. But now you people apply some common sense. When I say 1500 BCE, now this is 2024 CE. अब 2024 प्लस 1500 तो लगभग 3500 साल पहले, तो वही तो कह रहा है सेकेंड ऑप्शन। इसीलिए स्टूडेंट्स 3500 years old, this is absolutely correct because ये वही पीरियड बताएगा 1500 BCE, which is part of a guide to exorcising ghost may contain earliest known depiction of a ghost, visible only when viewed from above under a light. Anyway, students, the best answer here happens to be second option. There is no confusion at all. और students कितना smartly बाकी सब options में पेपर सेटर ने आपको confuse किया। तो do let me know ये question कैसा लगा और क्या आप लोग second option से agree करते हैं या नहीं। And if you don't agree, do let me know so that we can discuss further. तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ। I'll tell you आदित्य, उस बारे में अपन बात करेंगे एडमिट कार्ड से रिलेटेड। अभी तो सिंपल से अपन फोकस करते हैं एक बार, ठीक है, क्वेश्चंस पर। डायरेक्शन अपन अभी सिर्फ इसी पर रखते हैं। ओके, आपका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, रिप्लाई मिल जाएगा हमारी टीम से। चलिए सारे स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू पीपल एग्री दैट सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? एंड आई हैव टोल्ड यू हर ऑप्शन के बारे में कि व्हाई दिस पर्टिकुलर आंसर इज करेक्ट, why the other options are not correct. फटाफट एक बार कमेंट करो तो मजा आए। यस, ओके दिव्यांश, डन। इसीलिए मैंने कहा था स्टूडेंट्स, आज का सेशन अटेंड करने के बाद आपका जो फाइनल टच मिलेगा एक्यूरेसी पर, दैट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। ओके, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। This time I believe that you people will be more punctual in giving the answer. Be very much particular, और जिस भी आंसर को आप मार्क करो, बिफोर दैट आप थोड़ा सा क्रिटिकली सोचो, ट्राई टू फिगर आउट कि आखिर ये आंसर क्यों नहीं हो सकता या क्यों नहीं होना चाहिए इनफैक्ट। Yes, all the students जो अब लाइव ज्वाइन कर चुके हैं, this becomes the third question and we are discussing some very interesting and effective questions. We are discussing effective techniques to boost our accuracy. तो मेरे साथ इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो
Come on everyone, start giving the answers to this question. This is question number 3. Okay, one student has given the answer. Okay, Shubham. Okay, Divyansh. 2 students के आंसर्स हैं और दोनों अलग अलग. Okay, Ajay has given the answer. Done. Come on, rest of the students, hurry up. फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर देना स्टार्ट करो. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल कैट लेवल के क्वेश्चंस हैं, टू अंडरस्टैंड. ओके राहुल. ओके विनीत. ओके, तो इट सीम्स लाइक मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गिविंग 4th ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर. तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर 4th ऑप्शन है, बट कुछ बच्चों का आंसर, आई गेस दिव्यांश योर आंसर इज, शुभम का आंसर कुछ और है 3rd, नीतीश का आंसर भी 4th. क्या बात है, इस क्वेश्चन में इट सीम्स लाइक सबका मैक्सिमम जो आंसर है दैट इज सेम. ऑल द स्टूडेंट्स आर गिविंग अ यूनानिमस आंसर. चलो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वेश्चन सेज. So recently the WHO approved the first vaccine against malaria. The approval was not only a first for malaria but also for any parasitic disease. The moment was 30 years in the making, as Moscarex, the brand name of the drug, cost more than $750 million since 1987 to develop and test. The vaccine is not a silver bullet. It prevents only about 30% of severe malaria cases. But one modeling study showed that the vaccine could still prevent 5.4 million cases and 23,000 deaths in children under 5 each year. अब आप सोचो स्टूडेंट्स, केवल 30% जो सीवियर केसेस हैं उन्हें ये वैक्सीन आपके प्रिवेंट कर सकता है. पर फिर भी स्टूडेंट्स आप देखो 5.4 मिलियन केसेस प्रिवेंट होंगे एंड 23,000 डेथ्स इन चिल्ड्रन. 30 साल लगे इस वैक्सीन को बनाने में एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट वाज $750 million. चलिए, anyway students, coming on, first option, 30 years in the making and costing more than 750 million, Moscarex, a recently WHO approved vaccine against malaria, prevents only about 30% of severe malaria cases. Students, इस पूरे पैराग्राफ का जो टोन है ना वो बड़ा पॉजिटिव है. माना कि केवल 30% केसेस को ये प्रिवेंट कर सकता है, बट वो 30% भी स्टूडेंट्स इतना बड़ा staggering number hai, understand. So the tone of the paragraph is positive, but when I talk about the first option, the tone is negative because it says it prevents only about 30%. ये tone कैसा है? Negative. इसीलिए students first option cannot be the correct answer. Coming on second option, Moscarex, a recently WHO approved vaccine costing more than $750 million and 30 years in the making, can help prevent 5.4 million cases and 23,000 deaths in children under 5 each year by fighting malaria and any parasitic disease. अब स्टूडेंट समझो, मैंने ये बोला है कि ये जो वैक्सीन है आपके, दिस वैक्सीन, दिस अप्रूवल was not only a first for malaria but also for any parasitic disease. ओके, लेकिन सेकेंड ऑप्शन जिस तरह से लिखा गया, आपके क्या कहता है सेकेंड ऑप्शन? ये जो ड्रग है स्टूडेंट्स आपके 30 years in making can help prevent cases this much, बिल्कुल ठीक है, अंडर 5 year यहाँ तक भी ठीक है, by fighting malaria and any parasitic disease. तो सेकेंड ऑप्शन तो स्टूडेंट्स ये मैसेज देता है कि ये जो वैक्सीन है ये मलेरिया को भी प्रिवेंट करेगा एंड और किसी पैरासिटिक डिजीज को भी प्रिवेंट करेगा. जबकि स्टूडेंट्स पैराग्राफ में ये लिखा है कि दिस वैक्सीन ये फर्स्ट है which has been approved not only against malaria but any parasitic disease. So the meaning which is being conveyed here and the meaning which the second option is conveying, there is a difference between these two. The students, ये जो last का phrase है, this is not correct. Therefore, second option is not correct. Coming on the third one, so 30 years in the making and developed at a cost of $750 million, the recently WHO approved vaccine can help prevent this in children under 5 year. अब स्टूडेंट्स आप देखो, थर्ड ऑप्शन कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है दैट इज मलेरिया. ये वर्ड हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स पता ही नहीं चल रहा है कि ये वैक्सीन एक्चुअली है किसके लिए. तो इवन थर्ड ऑप्शन कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड मलेरिया हैज नॉट बीन यूज्ड हियर. ओके,
So anyway, the only correct answer which we are left with is the fourth option. And indeed, fourth option is the correct answer. I'm so glad to see that so many students have got the correct answer. But at the same time, I want to see that क्या सभी स्टूडेंट्स ने बाकी सब ऑप्शंस को जब रिजेक्ट किया तो मोर और लेस क्या वही सोचा जो मैंने एक्सप्लेन किया? अगर स्टूडेंट्स बाकी ऑप्शंस को रिजेक्ट करते समय भी आपके पॉइंट्स वही थे जो मैंने पॉइंट आउट किया, इसका मतलब है योर ऑब्जर्वेशन इज फैंटास्टिक नाउ, इट इज गुड नाउ. और अगर आपको लगता है नहीं सर हमने इतना डेप्थ में तो सोचा ही नहीं, हमने तो पढ़ा और यूं ही फोर्थ लगा और मार्क कर दिया, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स वी नीड टू बी पर्टिकुलर. अदरवाइज फ्लूक में यहाँ तो आंसर सही हो गया पर हर बार ऐसा होगा may not be possible. Okay, चलिए फैंटास्टिक. क्वेश्चन नंबर 4. स्टूडेंट्स थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है but now you people give the answer to question number 4. Your time starts now. Yes, चलिए सारे स्टूडेंट बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में. फैंटास्टिक. और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो. Yes, Divyansh in the evening. In the evening at 5. Okay, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा. Saurabh, I will be starting the classes of critical reasoning, logical reasoning for SNAP from 24th. एक बार CAT complete हो जाए उसके just बाद. Okay, but I'll take around 10 sessions and I'm confident that those 10 sessions will boost your confidence. Okay, don't worry. चलिए all the students, one more wonderful question. और ऐसे थोड़ी से बड़े क्वेश्चंस को पढ़ने में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए. बट द बेस्ट बात है ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट सो टफ. इसके ओवरऑल थीम को कैच करो एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. इस क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, अंडरस्टैंड. Yes, come on everyone. Start giving the answers now. Hello, Shubham has given the answer. Come on, rest of the students. अभी तक जो 3-4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे उसमें डेटा बहुत था, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके नॉट मच डेटा इज गिवन. तो ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल क्रक्स एंड द टोन ऑफ द पैराग्राफ, आई थिंक गिविंग द आंसर विल बी पॉसिबल फॉर अस. ओके Shita. Okay, Shubham. ओके विनीत, क्या बात है, सभी का आंसर सेम है. ओके चलो बहुत अच्छी बात है. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स
Okay, amazing to see that all the students are giving the same answer. इसका मतलब है बाकी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, and that is the reason you people are able to make out. Fantastic, बहुत अच्छी बात है. Okay, second option भी लग रहा है, ठीक है. Okay, perfect. So all the students have given the first option as the correct answer. So anyway, even I agree that first option should be the correct answer. So बिल्कुल first option is the correct answer. So while being aware of the sensibilities of the target language reader, the translator should also endeavor to preserve the socio-cultural content of the source language. Absolutely. Second option भी मैं एक बार देख लेता हूँ. The translator should be aware that contact between two alien cultures amounts to a confrontation between two heterogeneous sensibilities. नॉट एट ऑल. दिव्यांग, सेकेंड ऑप्शन किसी भी एंगल से नहीं हो सकता. और वैसे भी अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को देखोगे, ही मस्ट बी अवेयर दैट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू एलियन कल्चर्स अमाउंट्स टू अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू. दैट इज नॉट द केस. व्हाट अ ट्रांसलेटर शुड बी अवेयर अबाउट, दैट इज गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन. और वैसे भी स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का आंसर यहाँ पर सही है, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इस पैराग्राफ को डिस्कस करने में टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा. आप आराम से एक बार इसको समझोगे तो पता चल जाएगा. तो वेरी लास्ट लाइन, एन अनबैलेंस्ड अप्रोच माइट अल्टीमेटली अंडरमाइन द क्वालिटी ऑफ द ट्रांसलेटेड मटेरियल. ओके, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, पूरी पैराग्राफ को देखोगे तो जिस तरह का टोन है, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन मैचेस इट. सेकेंड ऑप्शन एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है. ओके, सेकेंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. तो बाकी सब ऑप्शंस भी पढ़ोगे. एनीवे, सबको आंसर मिल गया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूंगा. चलिए स्ट्रेट अवे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. यस, कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 5. नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट सो टफ टू अंडरस्टैंड. और ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है बिकॉज द काइंड ऑफ ऑप्शंस व्हिच आर गिवन टू अस, मुझे लगता है स्टूडेंट्स डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा. पर इसके बाद एक और जो क्वेश्चन मैं लूंगा, दैट विल बी वेरी गुड. चलिए, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्ट गिविंग द आंसर्स. Yes, come on. What is the correct answer? Okay, क्या बात है. इस क्वेश्चन का भी आंसर सबने सही दिया. And it seems like everyone has given the same answer. An overview of the aspects of subjective well-being and their association with relationship outcomes. Absolutely, ये जो पूरा पैराग्राफ है वो इसी के बारे में है. और बाकी जो ऑप्शंस है स्टूडेंट्स पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि दे आर टोटली रॉन्ग. तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा. ऑल द स्टूडेंट्स आर एनीवे करेक्ट. ओके, चलिए, आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट क्वेश्चन नाउ. एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट पिछले दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपके बिल्कुल सही हैं. एंड ऑल द स्टूडेंट्स वर एबल टू फाइंड आउट. बट यू पीपल डू अंडरस्टैंड, जिस क्वेश्चन में सभी के आंसर सही है, वो आंसर आपका भी सही हो जाए तो उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है. हालांकि गलत तो नहीं होना चाहिए, उससे तो अपन बहुत पीछे चले जाते हैं. बट सबका सही है और आपका भी सही है, दैट्स ओके.
बट अगर एज डेवलप करना है तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जहाँ सबके आंसर्स गलत है और मेरा सही है, तो दैट विल एक्चुअली गिव यू अ वेरी गुड परसेंटाइल। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हर तरह के क्वेश्चन को ढंग से हैंडल करो। तो अब ये जो दो क्वेश्चन थे ये कंपैरेटिवली इजी थे, डायरेक्ट थे। एंड नाउ लेट मी टेक द लास्ट क्वेश्चन and let me see how many students are able to give the correct answer. This becomes the last question of the day. All the students, come on. और कभी कभी हो सकता है पैराग्राफ थोड़ा सा philosophical हो, you may not be able to understand it thoroughly. Still, you people can focus on the keywords and try to get the correct answers. Okay, Vineet, you are asking about the last question. ठीक है, अपन एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं. आफ्टर दैट if time permits, I'll take it once again. और इसका अगर सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया तो kudos to you all. So be very careful in giving the answer and take your own time. Okay, Divyansh, okay, Aditya. Come on, rest of the students. Okay, Ajay. Okay, नीतीश. क्या बात है, सभी का आंसर बिल्कुल सेम. इशिता इज गिविंग अ डिफरेंट आंसर नाउ. शुभम का भी आंसर सेम है. चलो, एटलीस्ट वन स्टूडेंट शुड बी देयर हु कैन गिव अ डिफरेंट आंसर. तो डिस्कशन करने का कुछ स्कोप भी होता है. एनीवे, आई एम नॉट टेलिंग दैट बोथ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. लेट मी सी. But ठीक है, maximum students are saying fourth option is the correct answer and one student says the answer is third. I'll tell you which is the correct answer here and why. The connection of philosophy with politics has been less evident in Britain than in continental countries. Empiricism, broadly speaking, is connected with liberalism. But Hume was a Tory. अब students अगर आपको Hume के बारे में या फिर Tory किसको कहते हैं नहीं पता है तो that is okay. फिर भी students, let us try to give the answer. What philosophers call idealism has, in general, a similar connection with conservatism. But T.H. Green was a liberal. On the continent, distinctions have been more clear-cut, and there has been a greater readiness to accept or reject. Okay, to accept or reject a block of doctrines as a whole, without the critical scrutiny of each separate part. तो स्टूडेंट्स अब आप देखो, द कनेक्शन ऑफ फिलोसफी विद पॉलिटिक्स हैज बीन लेस एविडेंट इन ब्रिटेन. और लास्ट में ये कहता है, ऑन द कॉन्टिनेंट distinctions have been more clear cut and there has been a great readiness to accept or reject a block of doctrines as a whole without a critical scrutiny of each separate part. Okay, चलो, जिन बच्चों ने स्टूडेंट्स आंसर दिया फोर्थ ऑप्शन, एक स्टूडेंट का आंसर है थर्ड. तो सबसे पहले मैं थर्ड को ही डिस्कस करता हूं. If the relationship between philosophy and politics is too strong, it can lead
So important works and doctrines being rejected as whole due to the inherent bias of such a connection. Not at all, Ishita. How can you mark third option as the correct answer? मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि फिलोसफी और पॉलिटिक्स का जो कनेक्शन है आपके हैज बीन लेस एविडेंट इन ब्रिटेन दैन इन कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। और साथ में लास्ट में मैंने कहा कि ऑन दी कॉन्टिनेंट डिस्टिंक्शंस हैव बीन मोर क्लियर एंड हम चीज़ों को रेडीली एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं आपके विदाउट क्रिटिकल स्क्रूटिनी। तो मैं कहना तो कुछ और चाहता हूँ, तो थर्ड ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। ओके, सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। इन ब्रिटेन एज कंपेयर टू दी continent, the connection between philosophy and politics was less apparent. यहाँ तक तो ठीक है, less evident का मतलब क्या होता है? less apparent. As was evinced by the fact that on the continent there was greater readiness to reject doctrines. जबकि स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा है? On the continent there was greater readiness to accept or reject. और वो भी स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट without critical scrutiny. The second option is not the correct answer because we are just talking about rejection and that too students scrutiny के बारे में कुछ भी mention नहीं है, जो कि बहुत important चीज है। बिना critical scrutiny के we are ready to accept or reject. Okay, this is what the message is. Coming on the first one, on the continent, unlike in Britain, the connection between politics and philosophy is significantly stronger. Students, यहाँ पर क्या लिखा है? has been less evident in Britain. इसका मतलब है मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी कॉन्टिनेंटल कंट्रीज में, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में इट इज विजिबल, इट इज क्लियरली विजिबल दैन ब्रिटेन। पर स्टूडेंट्स आप देखो, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ता हूँ तो ये क्या कहता है? इज सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर। तो आई थिंक स्टूडेंट्स जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर यूज किए दैट डज नॉट मैच द काइंड ऑफ वर्ड्स विच आई हैव यूज्ड इन द पैराग्राफ। The first option is also not correct. The only correct answer is fourth one. एक बार fourth option को भी students पढ़ लेते हैं. On the continent, unlike in Britain, the connection between politics and philosophy is clearer, thus leading to blocks of doctrines being accepted and rejected without scrutiny. So everything is mentioned in the fourth option. So students, indeed, fourth option is the correct answer. Okay. So by this, let us come to the end of the session. होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड कम से कम पैरा समरी को लेकर एंड स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग पैरा समरी दैट डज नॉट मीन दैट दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ओनली इन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न व्हाटएवर मे बी द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। अगर स्टूडेंट्स आपकी नजर बहुत पर्टिकुलर है तो वहां पर करेक्ट आंसर दे पाना विल बी पॉसिबल। So today's discussion is going to help you a lot in getting correct answers on RC also. तो किसी भी ऑप्शन को कैसे कंपेयर करना है और पेपर सेटर कैसे कंफ्यूज करता है, दिस वॉज समथिंग विच वी डिस्कस्ड टुडे। ओके, चलिए, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड इफ यू वांट प्लीज टेल मी। सेकेंड वन मैंने आपको समझा दिया और सेकेंड इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज एनीवे स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं और वो भी विदाउट क्रिटिकल स्क्रूटिनी, तो उसे मिस करना इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड। ओके, चलो, सो वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन नाउ। एज कैट के साथ बने रहो एंड वेरी सून स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू लॉन्च just after CAT we are going to launch a dedicated course for interview, group discussion and essay preparation as well। एक बहुत अच्छा सा कोर्स जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा एंड आई एंश्योर दैट कि आपका कोई भी इंटरव्यू का कॉल बिना कन्वर्ट हुए नहीं रहेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून, गुड बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, विनीत वांटेड मी टू डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन। ओके विनीत, ले लेते हैं इसको। रिलेशनशिप डायनामिक्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सब्जेक्टिव वेलबीइंग इन सर्टेन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एक बार मैं पैराग्राफ देख लूं विनीत, बाकी सब स्टूडेंट जिनका हो चुका है दे मे लीव, और केवल विनीत के लिए आई विल बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है रिलेशनशिप डायनामिक्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सब्जेक्टिव वेलबींग। ओके, सब्जेक्टिव वेलबींग एंड रिलेशनशिप आउटकम्स। एनीवे विनीत, आपका जो पॉइंट है कि इसमें वाइस वर्सा दे रखा है वो भी ठीक है, एंड साथ में ये जो जोड़ा है ना, इन सर्टन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आई गेस इस पूरे पैराग्राफ में पर्टिकुलर कंट्रीज या सर्टन कंट्रीज की तो बात ही नहीं हो रही है। ये एक बहुत जेनेरिक डिस्कशन है बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ 90 कपल्स, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, डन। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, सी यू सून, एंड नेक्स्ट सेशन में कैट को लेकर हम कुछ और डिस्कस करेंगे और स्नैप एंड नोमैट्स को लेकर भी हमारी पूरी सीरीज चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।